neoliberalism, crony capitalism, imperialism, fascism, Brahmanism, bourgeoisie, proletariat. Umar Khalid was there, Kanhaiya Kumar was there, Sheila Rashid was there. बट बताइए when was the last time आपने इनका स्पीच सुना था या कोई रील देखा था, कहीं यूट्यूब में कोई वीडियो देखा था इनको बोलते हुए? हम सब इनके नाम तो जानते हैं बट इनके थॉट्स क्या है, आइडियाज क्या है, स्पीचेस कभी सुना ही नहीं है. Brahmanism is there. Okay, but how do you actually fight Brahmanism? Do you fight Brahmins? But Brahmins are in all parties. Dhruv Rathi, Akash Banerjee, Mohak Mangal. These are pretty liberal leaning people and they're very influential. But पता है प्रॉब्लम क्या है? ये आज तक कभी नहीं बोलते हैं कि देखिए आई एम अ लिबरल, आई हैव अ लिबरल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. ये कभी उसे क्लेम ही नहीं करेंगे. 1.5% ऑफ द वोटर बेस ये कम्युनिस्ट्स कितने पार्टीज में बटे हुए हैं बता सकते हैं आप? You have CPI, CPIM, CPIML and RCM. So many parties. भाई तुम्हारा 1.5% का वोट है और आप 4-5 पार्टीज में बट चुके हो. Whenever we talk about politics in India, we often reduce it to elections. Which political party won how many seats? Who lost how many seats? Where did they win from? Yet, politics is not just limited to the parliament. Politics primarily happens in the public sphere. On YouTube, on Instagram, the comment section, the Facebook discussions, spaces where these discussions happen, college campuses, debate stages, book launches. And in these spaces where people actually pay attention to, the youth actually pays attention to, हम ये find out करते हैं that the right wing, the Hindutva right wing, is actually winning. Now, what exactly do I mean when I say the right wing is winning? I'm not saying कि सब कोई right wing point of views के साथ agree कर रहे हैं. ना ना ना. What I'm exactly saying is that जो right wing opinions है, they are slowly becoming part of the mainstream discourse. When we look at people like Sai Deepak, Vikram Sampath, Anand Ranganathan, Abhijit Iyer Mitra, these are not fringe voices. They are treated as public intellectuals. They are treated as subject matter experts. इस country में जहाँ पे भी political debates हो रहे हैं, discussions हो रहे हैं, talk shows हो रहे हैं, podcasts हो रहे हैं, these people are part of these discussions. And not only that they are a part, they dominate the attention. इनके कितने सारे reels viral जाते हैं social media में, न चाहते हुए भी आप इनका कितना सारा content आप consume कर लेते हो. And young people who are being exposed to political discussions, political thought, people who are 17, 18, 20, जो undergrad के बच्चे हैं, जो पहली बार political discourse में they are getting into, they are being exposed to the opinions of the right wing more than, say, a liberal or a left wing kind of an audience. And ये कोई accident नहीं है, ये कोई algorithm का trick नहीं है. This is something which should be studied and analyzed because this is an important sphere जहाँ पे the right wing is currently dominating. The first reason is language and accessibility. And this is perhaps the most underrated reason. See, मैं जो हूँ, I have friends in JNU, I have friends in Ashoka, and ये जितने Delhi University and Mumbai के top colleges में जो political discussions होते हैं, I have been part of them, I have participated in them. And one thing I can tell you is that when you try to have a conversation in these spaces, the language used by people in the political left, these are terms like, neoliberalism, crony capitalism, imperialism, fascism, Brahmanism, bourgeoisie, proletariat. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि these words are wrong. I'm not saying these words don't have any value. These words are theoretical words. They have a theoretical value. So अगर आप इनके theories पहले से पढ़ चुके हो, then आपको ये words का मतलब समझ में आएगा. But when a layman is entering, जो अभी young है, 18, 19, 20 year old, they're trying to get into politics, वो ये words को नहीं समझेंगे. You cannot expect a 21-year-old, 19-year-old to understand what late stage capitalism means. ये जो left में इतने बड़े बड़े जो isms होते हैं, इसको फेंके जाते हैं, Marxism, Leninism, dictatorship of the proletariat. अरे बच्चों को समझाओ ये words होते क्या है. And most of the time when I listen to these discussions, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मुझे समझाता है. It more feels like it's a lecture, it's a seminar. And political discussions are not supposed to be seminars. And this is where I feel is a major drawback. Now, when we contrast this with the Hindutva right, when we hear speeches of
जय साई दीपक, अभिजीत अय्यर मित्रा, आनंद रंगनाथन, हम ये देखते हैं कि इनके जो स्पीचेस है, इट्स लाइक समवन इज एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन लेमैन्स टर्म। कोई बड़ा जार्गन नहीं है, कोई इज्म फिज्म नहीं है, ये बहुत क्लियर प्रिसाइज जार्गनलेस वे में बताते हैं। Because when I was 19, 20 and I didn't know much about politics, इनका वीडियोस वर वेरी इजी फॉर मी टू पिक अप फ्रॉम। बहुत ही डाइजेस्टेबल होता है। तो कोई यंग पर्सन जो पॉलिटिक्स एंटर करना चाहता है, ओपिनियन फॉर्म करना चाहता है, देयर कंटेंट इज सो आउट देयर। देखो, लेफ्ट विंग में इट्स नॉट लाइक स्पीकर्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। वी हैव पीपल लाइक उमर खालिद वाज देयर, कन्हैया कुमार वाज देयर, शीला रशीद वाज देयर। बट बताइए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने इनका स्पीच सुना था या कोई रील देखा था, कहीं यूट्यूब में कोई वीडियो देखा था इनको बोलते हुए? हम सब इनके नाम तो जानते हैं, बट इनके थॉट्स क्या है, आइडियाज क्या है, स्पीचेस कभी सुना ही नहीं है। Whereas राइट विंग के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, कितने सारे रील्स वीडियोस ऑफ दीज पीपल लाइक जय साई दीपक, आनंद रंगनाथन, हर पॉडकास्ट, हर यूट्यूबर यही डिस्कस कर रहा है। सो देयर आइडियाज आर प्रीटी मच आउट देयर इन अ वेरी इजीली एक्सेसिबल फॉर्म। इनके आइडियाज जब एक्सेसिबल होते हैं तो ज्यादा लोग इन्हें एक्सेस कर पाते हैं। एंड दिस कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज गिव्स द राइट विंग स्पेस अ वेरी बिग एडवांटेज। जो ये हम हाइपर नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म, फैशिज्म, जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं कि हमको लगता है कि यार हम कितने पढ़े लिखे, हम इतने सुपीरियर है, वी आर यूजिंग दिस लैंग्वेज। बट रिमेंबर, दिस इज व्हाट इज मेकिंग आवर आइडियाज इनएक्सेसिबल टू अ लॉट ऑफ यंग पीपल। यंग पीपल हु वी वांट दैट वो हमारे साइड में आए और हमारे आइडियोलॉजी में जुड़े। रीजन नंबर 2 व्हाई द राइट विंग एक्चुअली विंस, इट्स द अस वर्सेस देम नैरेटिव। राइट विंग का हिंदुत्व जो नैरेटिव है, फंडा इज वेरी क्लियर। हम हिंदू थे, हमारी बहुत प्राचीन सभ्यता था, कल्चर एंशिएंट रामराज्य था, सब कुछ ठीक था, हम लोग सबसे एडवांस थे, सबसे नॉलेजेबल थे, सबसे रिच थे, सब कुछ ठीक था। फिर वो बाहर से लोग आए थे, वो मुसलमान आए थे, दिल्ली सल्तनत, मुगल, इन्होंने हमें बर्बाद किया। फिर वो अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश, उन्होंने हमें लूटा। And because of that, we lost our glory, we lost our confidence, and we lost our respect. Now we have to reclaim what was lost. बड़ा सिंपल फंडा है। एंड इसमें जैसे ये जो लिबरल लोग हैं, लिबराडो लोग हैं, ये हमारे कल्चर को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। द कम्युनिस्ट्स, दे ट्राई टू ट्विस्ट आवर हिस्ट्री, और उन पे आरोप डाल के दे मेक दिस वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नैरेटिव दैट वी हिंदूज, हम इन ग्रुप, एंड दीज मुस्लिम्स, कम्युनिस्ट्स, जो भी हम सब एग्री नहीं करता, दे आर द आउट ग्रुप। तो ये कि बहुत ही सिंपल अस वर्सेस देम नैरेटिव खड़ा हो जाता है। इट्स वेरी क्लियर नैरेटिव। ये हमारे लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, इनको हेट करना चाहिए और ये इनको सपोर्ट करना चाहिए। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स कॉन्ट्रास्ट द राइट विंग नैरेटिव विद द लेफ्ट विंग नैरेटिव। लेफ्ट विंग में व्हेन वी आस्क दुश्मन कौन है, हु इज द एनिमी, व्हाट शुड वी फाइट अगेंस्ट, दे विल से neoliberalism, capitalism. Okay, how do you fight capitalism? Who are you supposed to fight against? Who is the enemy? वो क्लियर नहीं है। कभी अदानी, अंबानी, बट ऑल्सो रिमेंबर, इवन जो लेफ्ट विंग पार्टीज है, दे ऑल्सो गेट कॉर्पोरेट फंड, सो लाइन्स आर नॉट क्लियर। एंड देन दे से Brahmanism is the enemy. Okay, but how do you actually fight Brahmanism? Do you fight Brahmins? But Brahmins are in all parties, so are you supposed to fight them? And these words, they say ब्राह्मणवादों से लड़ो, हिंदुत्ववादियों से लड़ो, इनसे लड़ो, उनसे लड़ो। Fine, but who exactly are these people? Who exactly is the enemy? Clarity नहीं होता है। And I'm not saying these are not valid points. These are valid points that we have to fight against capitalism. We have to fight against the Brahminical system. We have to fight against all these communalism and all that. But the clarity distinction नहीं है कि दुश्मन है कौन और हमारे साइड वाले कौन है। तो इट इज रियली गुड इफ यू वांट टू डू एन एनालिसिस कि ये प्रॉब्लम है, बट आपको अगर किसी को एक्सप्लेन करना है दैट us versus them narrative है, क्लैरिटी चाहिए that these are our people and these are the ones we are supposed to fight, that is very hard to get, at least on the political left. तो जो narrative का clarity होता है, right wing has a very clear, oh Hindu, we lost our soul, we need to reclaim it. Hindu reclamation is Hindutva. Whereas left wing, you'll have 10 different stories. कभी कैपिटलिज्म होता है, कभी ब्राह्मणिज्म होता है, कभी कुछ और पेट्रियार्की. It's difficult. It's not a straight answer. Point number 3, owning your political identity. देखिए, liberal side में ऐसा नहीं है कि there are no big voices. There are big voices, of course. Everyone knows Dhruv Rakhi,
Akash Banerjee, Mohak Mangal. These are pretty liberal leaning people and they're very influential. But पता है प्रॉब्लम क्या है? ये आज तक कभी नहीं बोलते हैं कि देखिए आई एम अ लिबरल, आई हैव अ लिबरल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये कभी उसे क्लेम ही नहीं करेंगे। ये हमेशा कहेंगे अरे वी आर जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, वी आर जस्ट गिविंग आवर ओपिनियन, वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग फैक्ट्स। देयर इज नो सच थिंग एज नो आइडियोलॉजी वाला पॉलिटिक्स। एवरी पॉलिटिकल डिस्कशन स्टार्ट फ्रॉम एन आइडियोलॉजी। तो अगर आपका आइडियोलॉजी है और आप एक लिबरल आइडियोलॉजी से आ रहे हो, ओन इट, से आर अ लिबरल, उसमें गलत क्या है? अगर आपका वो थॉट प्रोसेस है तो क्लेम इट ना। बट नहीं, ये वो कभी नहीं करेंगे, कभी लेबल में नहीं अटैच करेंगे। कॉन्ट्रास्ट इट विद द राइट विंग। जे साई दीपक खुले में बोलता है आई सपोर्ट हिंदुत्व। Anand Ranganathan खुले में बोलता है आई सपोर्ट हिंदू रेक्लेमेशन। These people are clear with their ideology and they're proud and unapologetic about it. वही सोशल मीडिया के स्फीयर में कितने क्रिएटर्स हैं who can proudly say look I'm a liberal और look I'm a leftist, I'm a communist, I'm an Ambedkarite। कितने ही क्रिएटर्स हैं यार, मुश्किल से। वी ऑलवेज ट्राई टू प्रिटेंड एज इफ हम न्यूट्रल हो गए, हम तो सवाल कर रहे हैं। अरे भाई नहीं कर रहे हो सवाल। अगर कर भी रहे हो, you have to acknowledge your political leaning. That's the bare minimum. And when you fail to do this, when you pretend that I'm neither here nor there, it becomes hard for people to join your tribe. आप खुद स्टैंड लेने के लिए डर रहे हो और आप एक्सपेक्ट करो कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे। So this becomes a difficult kind of a conversation because the right wing, man, they have the guts to unapologetically claim their identity and we are still looking and searching for our identity. Reason number 4, unity versus constant infighting. देखिए जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, it is not just limited to the BJP. There is the RSS, there is the Vishwa Hindu Parishad, there is the Bajrang Dal, there is the Arya Samaj. There are multiple organizations जो यही आइडियोलॉजी में लीन करती हैं। And in all of these organizations, it's not like ये सारे हर चीज पे एग्री करते हैं, ऐसा नहीं है। इनके बीच में भी there are differences, disagreements, rivalries होते हैं। बट ये लोग एक बहुत सिंपल चीज समझते हैं, जब पावर चाहिए होता है ना, ये सारे यूनाइट हो जाते हैं and they back their political wing, which is the BJP. And despite them being across so many states, winning so many seats, जब elections की बात आती है और politically अपना बात रखने की बात आती है, they are all very clear, very united. Now contrast that with the political left. India में if you look at the most leftist most party, it's the communists, right? And communists को पूरे इंडिया में मिला के कितना परसेंट वोट आता है? It's less than 1.5% of the entire voting population of India. Now 1.5% of the voter base ये कम्युनिस्ट्स कितने पार्टीज में बटे हुए हैं बता सकते हैं आप? You have CPI, CPIM, CPIML and RCM. It's so many parties. भाई तुम्हारा 1.5% का वोट है और आप 4-5 पार्टीज में बट चुके हो। Does it make sense? And ये किस बात पे बट रहे हैं? Some minor ideological difference in the party splits. Or this thing is not just for the communists. Even if you look at Ambedkarite politics, डॉक्टर अंबेडकर ने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था, उसका क्या हालत है आज? वो कितने हिस्सों में स्प्लिट हुआ, आज उसको कौन चला रहा है, और वो बीजेपी से अलाई करके भी चला रहा है, वो भी है। एंड इवन इफ यू लुक एट द स्टोरी ऑफ द दलित पैंथर्स, वन ऑफ द ग्रासरूट्स अंबेडकराइट मूवमेंट्स, उसका क्या हुआ? कितने स्प्लिंटर्स हुए? ओ माय गॉड। एंड इफ यू लुक एट स्टूडेंट पॉलिटिक्स, लुक एट इवन जेएनयू, जेएनयू में कितने लेफ्ट पार्टीज हैं? देयर इज एसएफआई, एनएसयूआई, आईसा, बापसा। अरे if your enemy is common, you have to fight against Hindutva. Do the very basic thing of uniting. Minor differences पे इतना बट जाना is not prudent politically speaking. You can have your ideological differences, you can have your debates, कोई मना नहीं कर रहा है. But when it is time to fight against a common enemy, identify that and be united. वो नहीं हो पा रहा है इनसे। देखिए, I am not a hater. I am part of the left-wing political ecosystem. It's clear based on my opinions and points of views. However, when I say all this, I'm not saying the right wing is correct या उनके points अच्छे हैं. What I'm basically pointing out is that they are more effective. The left wing can have a better argument, but जब वो बात पहुंचाने की बात आती है, to communicate that with the masses, we fail. When it's about owning to our labels, we fail. When it's about uniting to fight a greater enemy, that also we fail.
So this video is for us to think and ponder to how to make our spaces more inclusive, how to make our language more inclusive. Because देखिए, it is high time that we need more politically left voices in the Indian political discourse. Our country was based on that. Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Periyar, Dr. Ambedkar, these were all liberal leaning intellectuals. None of them were right wingers. But now the discourse is dead, and that's sad. And that is what we have to revive.